ट्रेडिंग। सो चार्ट इंक आपको कैसे हेल्प कर सकता है आपके ट्रेडिंग में, वो हम लोग आज इस सेशन में बात करेंगे। बट बिफोर दैट आई लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस, इफ यू आर अ ट्रेडर तो आप किस में ज्यादा ट्रेड करते हो? यू गाइस ट्रेड इन इंडेक्स और यू गाइस ट्रेड इन स्टॉक्स? ओके, टाइप इन चैट बॉक्स in which instrument you prefer to do trading, index or stocks? So people are saying index, stocks. It's a mix actually, but most people are in stocks. Okay, great. So the biggest problem, which I have seen which traders face, कि stocks बहुत सारे हैं. Okay, universe of stock is very broad. So how we can find out किस stock में क्या हो रहा है? So this is where actually Chart Inc can help you, because we cannot scan or we cannot track each and every stock manually. So this is where scanners will help. बट काफी सारे ट्रेडर्स का माइंडसेट ये होता है कि वी ट्रेड ओनली इन इंडेक्स. शायद आपने भी देखा होगा, दे some traders do not prefer to trade in stocks. The reason is because universe of stock is very broad. किस stock में क्या चल रहा है we cannot come to know. So they feel that index तो दो ही है, Nifty, Bank Nifty, so it is easy to track those indexes. So here I like to tell you, do not keep this mindset कि हमको इंडेक्स में ही ट्रेड करना है and we will not trade in stocks. See, you can always take the help of scanners जो आपको स्कैन करके देंगे किस स्टॉक्स में क्या बेसिकली कंडीशन चल रही है. जो लेट्स से अगर आप कैंडल पैटर्न्स पे ट्रेड कर रहे हो, सो आप उस हिसाब से सेटिंग्स बना सकते हो. यू कैन क्रिएट अ स्कैनर. लेट्स से इफ यू विश टू ट्रेड बुलिश इनसाइड पैटर्न, तो आप बुलिश इनसाइड पैटर्न का स्कैनर बना सकते हो. लेट्स से इफ यू विश टू ट्रेड गोल्डन क्रॉसओवर, तो आप गोल्डन क्रॉसओवर का स्कैनर बना सकते हो. किन किन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है उसका हम स्कैनर बना सकते हैं. सो डू नॉट कीप दिस माइंडसेट कि मुझे इंडेक्स में ही ट्रेड करना है. आई डोंट वांट टू ट्रेड इन स्टॉक्स, बिकॉज एट टाइम्स यू विल फाइंड इंडेक्स विल नॉट give you good opportunity. Index will turn highly volatile. So वो time पे you can switch yourself in stocks. Okay, so this is the web page you can see on screen, chartinc.com. So if you are a new user, if you are if you are looking at charting for the first time, तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना होगा. You have to create a login. Okay, you have to first register yourself and then you need to log in your account. So I have a account already with charting, so let me log in inside that. And here you can see these are the some scanners, okay, which I have already created. On the top you can see we have a screeners option and here it is showing create scan. ठीक है, इस पे क्लिक कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक स्कैनर. ठीक है, एक बेसिक स्कैनर हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं वो हम लोग देख लेते हैं. लेट्स से आई वांट टू चेक which stocks closed in green in last trading session. Last trading session मतलब फ्राइडे को कौन से स्टॉक्स फ्राइडे को ग्रीन में बंद हुए, यानी कि पॉजिटिव बंद हुए. किन किन स्टॉक्स में एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई है. तो हाउ वी कैन सेट दिस कंडीशन. सो हियर यू कैन सी यू हैव अ प्लस आइकन. ठीक है, यहां पर आपको क्लिक करना है. सो वेरी फर्स्ट थिंग अगेन यू कैन सी ऑन टॉप वी हैव अ स्क्रीनर्स. स्क्रीनर्स के नीचे क्या लिखा हुआ है, यू कैन सी वी हैव अ क्रिएट स्कैन ऑप्शन. When you select this create scan option, okay, this page will appear. Now you need to click on plus icon. Okay, first condition what I want to check, कौन से stocks green में बंद हुए. Okay, which stocks were having positive day on Friday. So here what I will type, closing price. Okay, closing price is greater than opening. Okay, closing price is greater than open. So here you can read now, latest close is greater than latest open. कौन से stock positive बंद हुए. Now which segment I am scanning, you can check here. It is written cash segment. When you click on cash, okay, you will get so many options. तो जो segment आपको scan करना है, you can create a scanner for that segment. So let's say I want to scan only Nifty 50 stocks. So you can select Nifty 50 stocks. So Nifty index is a group of 50 stocks. Out of 50 stocks, जो भी stocks positive में बंद हुए उनकी list आपको मिल जाएगी. और you can also click on futures. तो जो stock FNO में है, okay, all those stocks which are in derivative segment, उनमें से कौन से stock green में close हुए उनकी list आपको मिल जाएगी. So for the time being, let's say I'm scanning Nifty 50.
So I want those stocks in which closing price is greater than opening price on Friday. Okay, latest means last trading session. Now when you click on run scan, here you can see the list of stocks. Okay, these are the 7 stocks which closed in green on Friday. So let me show you one stock to cross check if this scanner is doing its job correctly. आप इसको cross check कीजिए. So let's pick one stock, let's say maybe Tech Mahindra. ठीक है, Tech Mahindra we will pick and see if we have a bullish candle in Tech Mahindra. Okay, you can cross check this by opening the graph, and if you find green candle, यहाँ पर आप last candle check कर सकते हो. We have a green candle, so this means this scanner is perfect, it's doing its job. आप स्कैनर को सेव कर सकते हो. Okay, you can save the scanner. Once you have designed the scanner, you have cross check it is working fine. Okay, next step, what you can do, you can save the scanner so that you can use it next time. Again, you don't have to give any condition. So here you can see the option. Okay, save scan. So click on save scan, and here you can mention the name. So this was bullish stocks scan. ठीक है, आप अपने हिसाब से कोई भी नाम दे सकते हो. Okay, now here you can click on submit. तो इससे क्या होगा, आपका स्कैनर सेव हो जाएगा. Okay, once your scanner is saved, what you can do so that you can easily use in live market, तो इसको आप bookmark भी कर सकते हो. You can bookmark in your Chrome browser. So how to bookmark? You can click on star mark. यहाँ पर आपको star mark दिख रहा है. Okay, add bookmarks. यहाँ पर आप अपना नाम दे सकते हो. Okay, whatever name you wish to give. So हमने कौन सा स्कैनर बनाया? बुलिश कैंडल एक स्कैनर बनाया. किन किन स्टॉक्स में एक बुलिश कैंडल बनी है? तो बुलिश कैंडल कब बनती है? व्हेन क्लोजिंग प्राइस इज ग्रेटर देन ओपनिंग प्राइस, तो आपको एक बुलिश कैंडल मिलेगी. सो हियर यू कैन गिव द नेम बुलिश कैंडल स्कैनर. सो इन दिस वे यू कैन बुकमार्क. इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू यूज स्कैनर इन लाइव मार्केट. Just a minute. Now in the same way you can also create a scanner of bearish candles. ठीक है, कौन से stocks negative में बंद हुए on Friday, उसका भी हम स्कैनर बना सकते हैं. So can you tell me what should be the condition? ये हमने bullish candle का स्कैनर देखा. How to scan those counters जिनमें bullish candle फॉर्म हुई है. अगर आपको bearish candle क्रॉस चेक करना है, किन किन स्टॉक्स में bearish candle फॉर्म हुई है, so what conditions you will give? Okay, you can type in chat box. Let me see if you can type the condition. Right, closed should be less than open. So greater than की जगह यहाँ पर आपको सिर्फ select करना है less than and click on run scan. So out of Nifty 50 stocks, you can see now 7 stocks positive बंद हुए थे, and here you can see we have a list of remaining 43 stocks which closed in red on Friday. Okay, let's see what was the Nifty, whether Nifty closed in green or it closed in red. Okay, so this is Nifty spot. You can see Nifty was closed in red on Friday. फिर भी 7 stocks ऐसे थे जो positive बंद हुए थे. So in this way you can create a scanner. तो पहले आपको condition देनी होगी. Once you know how to give condition, you will easily get the set of stocks. Now let's create one another scanner. Let's say some traders prefer to trade those stocks जिसमें volume काफी ज्यादा है. So based on volume you can also give condition. So let's say I want to check किन stocks में volume is more than, okay, is greater than, let's say 5 million. Okay, it's greater than 5 million. I want to scan those stocks जिसमें volume is more than 5 million. Okay, 5 million is like 50 lakhs. So when you click on run scan, so you will get the list of stocks जिनमें 5 million से ज़्यादा volume है. So from the basket of Nifty 50, we have 11 stocks in which volume is more than 5 million. So this is how you can also scan stocks based on volume condition.
Now you can change this number. Okay, I hope this condition is very simple. Volume greater than number 5 million. Now you can change the number. ठीक है, 5 million को change करके let's say maybe 2 CR. Okay, we can keep condition जिनमें volume more than 2 CR से ज्यादा है, उन stocks को हम लोग scan करते हैं. So in Nifty 50 segment, you can see we do not have any stocks which meet this condition. तो अगर कोई भी stock condition meet नहीं कर रहा है, you will get this option, no stocks filtered in the scan. So in that case, what you can do, you can change the segment. आप segment change कीजिए. So maybe we do not have any stocks in Nifty 50. Let's scan future segment because in FNO we have more than 150 stocks. So here you can see now we got some stocks in which volume is greater than 2 CR. So very first stock you can see we have first source solution. Now you can open the graph of FSL and cross check if this scanner is working fine. Okay, here you can see we have a FSL and I will quickly check the volume. Now when you place the cursor on last candle, ठीक है, last candle पे आप cursor रखेंगे, you can actually read the volume. ठीक है, वॉल्यूम आप रीड कर सकते हो. कहां से आप रीड कर सकते हो? यू कैन रीड द वॉल्यूम इंफॉर्मेशन फ्रॉम टॉप लेफ्ट. यहां पर देखिए स्कैनर्स हैं एंड दिस इज VOL. VOL स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन लास्ट ट्रेडिंग सेशन. सो यू कैन सी द वॉल्यूम इज 20 million. Okay, more than 20 million. It is 20.318 million. Okay, so in this way also you can create the scanner. ठीक है, इनको कहा जाता है वॉल्यूम शॉकर्स और वॉल्यूम स्पाइक्स. किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अचानक से अगर ज्यादा वॉल्यूम आ रहा है, so this clearly shows something is going on in that company. So why FSL is having a very good volume, more than 2 CR volume? You can see because it has given a resistance breakout. So in this way you can scan or you can do the analysis on every stock if something is going on, and maybe you can have a good trading opportunity on Monday in these counters because इनमें volume काफी अच्छा हो रहा है. So FSL जैसे हमने check किया, we got resistance breakout, so you can keep this stock in watch list. इसको आप watch list में रख सकते हो. Maybe if you are getting any trading opportunity on Monday, you can go for it. It is showing good volume with resistance breakout. तो breakout के time पे आपको ज्यादा volume दिख रहा है, which is positive thing. So in this way you can scan those stocks having volume spikes. Now कुछ traders volume में भी अगर हम लोग in depth जाएं, so some traders prefer to check 20 days का average volume. What is 20 days का average volume? So based on that also we can set conditions. So let's say I want to check those stocks जिनमें volume 20 days के average से ज्यादा है. Okay, volume is greater than 20 days average. So here you can see volume greater than, okay, this is moving average SMA. Here again I will select, let's say, volume. So if you want to scan those stocks जिनमें average volume is more than last 20 days, तो उनकी list मिल जाएगी. So when I click on run scan, again you can see we have a list of so many stocks. इसको हम लोग further एक condition देके reduce कर सकते हैं. Let's say I want to scan those stocks जिनमें volume is 3 times than 20 moving average. Okay, greater than 3 times. So here I will use the mathematical function. I want stocks in which volume is more than 3 times than 20 days average volume. तो जनरली जो 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम है उसका 3 टाइम्स किन किन स्टॉक्स में वॉल्यूम हुआ. सो अगेन दिस इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम स्पाइक. सो यू कैन सी वी हैव लिस्ट ऑफ 4 स्टॉक्स इन व्हिच वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स इट्स 20 डेज एवरेज वॉल्यूम. जो भी लास्ट 20 डेज का एवरेज वॉल्यूम है उसका 3 टाइम्स, मोर देन 3 टाइम्स उसमें वॉल्यूम हुआ. सो लेट्स क्रॉस चेक. अगेन FSL आ रहा है यहाँ पर. Okay, now this is the volume bars which you can see. Volume bars के ऊपर आपको एक line दिख रही है. So this line is nothing but it is 20 moving average line. So this is the normal average volume in this counter.
and see what happened in last trading session. When I keep a cursor on candle, आप volume and average volume दोनों information read कर सकते हो from left side. Okay, volume उसके नीचे average volume. So look at the average volume. What is the average volume? Average volume, it is 4.65. Now just multiply by 3. Okay, 4.65 into 3, इसको आप multiply कीजिए 3 के साथ, because हमने condition क्या दी है कि स्टॉक में वॉल्यूम 3 टाइम्स से ज्यादा होना चाहिए एवरेज वॉल्यूम से, लास्ट 20 डेज के एवरेज वॉल्यूम से 3 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम चाहिए. सो 4.65 into 3. Okay, so this should be somewhere close to 12 to 13. And look at the actual volume. Actual volume is 20. Actual volume is 20. So this scanner is now doing its job perfectly. तो इसको भी आप सेव कर सकते हो. तो जो एवरेज वॉल्यूम होता है उससे 3 टाइम्स ज्यादा वॉल्यूम आपको दिख रहा है एट द टाइम ऑफ ब्रेकआउट. सो अगेन दिस इज अ पॉजिटिव साइन. सो एज अ ट्रेडर वी कैन track this stock on Monday. If you are getting any trading opportunity, you can go for it. I hope you guys can understand, how we can create conditions. Now let me show you गोल्डन क्रॉसओवर. ठीक है, अगर आपको गोल्डन क्रॉसओवर का स्कैनर बनाना है, हाउ यू कैन क्रिएट कंडीशंस फॉर सेम. सी गोल्डन क्रॉसओवर इन टेक्निकल एनालिसिस इंडिकेट्स कि ट्रेंड में एक शिफ्ट आ रहा है. प्राइस जो है वो अपना ट्रेंड चेंज कर रही है, पॉजिटिव साइड की तरफ चेंज कर रही है ट्रेंड. सो गोल्डन क्रॉसओवर इज नॉट अ कंफर्मेशन कि यहां से एक अप ट्रेंड स्टार्ट होगा. इट्स जस्ट एन इंडिकेशन कि प्राइस में शिफ्ट आ रहा है, ट्रेंड में शिफ्ट आ रहा है. सो हाउ टू create golden crossover? So before that, let me see if you guys can know what golden crossover is. You can type in chat box. अगर हम लोग 20 और 50 moving average use कर रहे हैं, so which conditions we will give for golden crossover? If you are using 20 days EMA and 50 days EMA, so what condition we can give for creating a scanner on golden crossover? Right, 20 EMA greater than 50 EMA. Simple. So click on plus sign. Okay, here you can type EMA. Okay, here you will get exponential. ये option आएगा. Okay, exponential number you can see by default it is 20. Okay, now which option we will select? Okay, this is very very important. अगर आपको fresh stocks चाहिए, you need to select this option, crossed above. जिन stocks में भी 20 moving average ने क्रॉस किया है, तो यू विल गेट फ्रेश स्टॉक्स. अगर आप ग्रेटर देन सिलेक्ट करेंगे तो जिनमें गोल्डन क्रॉसओवर 1 महीने पहले हुआ था वो स्टॉक्स भी आ जाएंगे, या 1 हफ्ते पहले हुआ था वो स्टॉक्स भी आ जाएंगे. सो इफ यू वांट टू हैव अ फ्रेश स्टॉक्स, सो गो फॉर क्रॉस्ड अबव कंडीशन इंस्टेड ऑफ ग्रेटर देन. व्हेन यू सिलेक्ट क्रॉस्ड अबव यू विल गेट फ्रेश स्टॉक्स. मतलब फ्राइडे को किन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है, those stocks you will get when you select this condition, crossed above. Crossed above what? Crossed above 50 moving average, right? 20 EMA crossed above 50 EMA. So here I will change the number from 20 to 50. Okay, 20 to 50. So here you can read this condition, 20 EMA. Okay, latest means in last trading session, Friday trading session. 20 EMA crossed above 50 EMA. Okay, you can use 2050 for golden crossover. You can also use 50 200. Okay, 50 EMA crossed above 200 EMA. So this is also you can use. So depend on your trading style. As a trader, see, we have so many moving average. Some traders also use fib numbers as a moving average. So I hope आपने सुना होगा 1321. Many traders prefer to trade on these two combination, 13 moving average, 21 moving average. So you can create condition for this, 13 EMA crossed above 21 or 21 EMA crossed above 34. So depend on your trading style, you can set the condition for golden crossover. You can change the time frame also. देखिए latest means daily time frame, मतलब वो last trading session के बारे में बता रहा है. When you click on latest, here you can see it is showing inside daily candles. देखिए daily candles के अंदर आपको दिख रहा है latest. Latest means as per last trading session, that is as on Friday.
If you want to have a on weekly time frame, if you want to have a scanner on weekly time frame, then you can select weekly. तो यहाँ पर आपको weekly select करना पड़ेगा. तो on weekly time frame पे जिन भी stocks में golden crossover हो रहा है, those stocks you will get when you click on run scan. Okay, you can change the time frame. So when we have a latest, just you need to remember it is as per daily time frame. If you want weekly, select weekly. Okay, if you want monthly, you can select monthly. Here you can see the option. Okay, monthly का भी option है. You have an option for intraday also at the top. ठीक है, इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको चेक करना है आवरली टाइम फ्रेम में किन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हो रहा है. यू कैन सिलेक्ट आवरली टाइम फ्रेम. ओके, यू कैन सिलेक्ट आवरली टाइम फ्रेम. सो डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग स्टाइल यू कैन गिव द कंडीशन. सो दिस इज नाउ बेस्ड ऑन आवरली टाइम फ्रेम. किन स्टॉक्स में गोल्डन क्रॉसओवर हुआ है ये आपको आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता रहा है. सो लेट्स चेक ऑन डेली टाइम फ्रेम. किन स्टॉक्स में रिसेंटली ऑन फ्राइडे वी हैव अ गोल्डन क्रॉसओवर. लेट्स चेक. So here I will select latest for daily time frame. So one stocks it is showing which is UPL. So in UPL, okay, 20 moving average is crossing 50 moving average. Okay, this is just an crossover. It does not mean कि UPL का price ऊपर ही जाने वाला है. You need to have a further analysis. Okay, and remember one thing: these moving average, work very well. If stock price is moving in trend, अगर already trend में चल रहा है stock, तो उसमें काफी अच्छे से work करते हैं moving average. If stock price is completely sideways, okay, you can ignore. उन stocks को आप ignore कर सकते हो. So here you can see we have a UPL graph. Let me put moving average 20 and 50 moving average के हिसाब से हमने condition बनाए. So let me show you. This is 20 moving average. This is 50 moving average. So here you can see the price is completely moving sideways. Okay, if it is moving sideways, do not focus on moving average. So just check the last candle. When you zoom, you will see both moving averages are about to cross each other. Okay, both moving averages are about to cross each other. So in this way, you can create this scanner. In the same way, you guys can create a scanner for dead crossover. आप dead crossover का भी scanner बना सकते हो. So just do the opposite condition. Okay, give the opposite condition. So 20 EMA, what we will select now, crossed below. Okay, crossed below 50 moving average. So this will be the condition for dead crossover. Okay, once you create the scanner, फिर आपको क्या करना है, save करना है. Okay, you need to save the scanner. Okay, here you can see the option. You can save the scanner so that you can use it next time. You don't have to give condition again and again. Now you can also give condition on candle pattern. ठीक है, candle patterns भी अगर आपको ढूंढने हैं, let's say as a trader you use candle patterns in your trading, तो उसके ऊपर भी आप scanner बना सकते हो. So let me show you one scanner for bullish engulfing candle pattern. Okay, here you can see on screen we have a bullish engulfing pattern. So bullish engulfing pattern is a 2-day pattern, right? So on first day you see what happened, we have a bearish candle. On next day we have a bullish candle. तो अभी इसका स्कैनर हम लोग कैसे डिजाइन करेंगे? Okay, creating a scanner for candles can be bit complex. Bullish engulfing का कैसे हम बना सकते हैं, that we will quickly see. So it's a 2-day pattern. तो पहले दिन पे देखिए क्या होगा, पहले दिन पे price will fall. So let's put this condition. This is very easy. On first day, okay, price will fall. You will get a bearish candle. Okay, so let's assume now. Just give me a minute. Okay, let's assume now. Okay, this pattern is formed on 2 days. This is Monday and this is Tuesday. Day 1. Okay, day 1 is Monday and day 2 is Tuesday. Let's say I'm scanning the stocks on Tuesday. हम Tuesday को scan कर रहे हैं stocks को कि किन-किन stocks में एक bullish engulfing pattern form हुआ है. We are doing this scanning on Tuesday. So what condition I will give to the scanner? सबसे पहली condition क्या होगी? सबसे पहली condition होगी bearish candle की. Bearish candle कब बनती है? When closing price is less than opening price, right? But
आई एम स्कैनिंग दिस ऑन ट्यूसडे, किन किन स्टॉक्स में बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। तो बेयरिश कैंडल कब बनी होगी, बेयरिश कैंडल बनी होगी मंडे को, ओके, वन डे बिफोर। सो इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट, ओके, इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट व्हाट आई विल सिलेक्ट, वन डे अगो, ओके, वन डे अगो। दिस मीन्स ऑन मंडे किन किन स्टॉक्स में एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है। सो वन डे अगो क्लोज इज लेस देन ओपन। किन किन स्टॉक्स में वन डे बिफोर और वन डे अगो बेयरिश कैंडल्स फॉर्म हुई है। This is the one condition we have to give. Now let's look at the next condition. What can be the next condition? Okay, so on day one bearish candle, on day two you can see we have a bullish candle. Now the word engulfing means to cover. Can you see the real body, जो second candle की real body है, is engulfing, is covering previous candle real body. So on day two what happened? On day two opening is below previous closing. Okay, opening is lower than previous closing. You can read the condition. Next day पे क्या हो रहा है, स्टॉक ओपन हो रहा है नीचे, क्लोज के नीचे ओपन हो रहा है, एंड बंद कहां पर हो रहा है, यू कैन सी इट इज क्लोजिंग अबव प्रीवियस डे ओपनिंग। प्रीवियस डे का जो ओपन था उसके ऊपर बंद हो रहा है। सो वी कैन गिव these two conditions now as a second and third condition. So what second condition I will do? Here I will give opening. Okay, opening is less than, opening is less than previous closing. Previous closing मतलब one day ago. Okay, previous closing means one day ago. Latest opening मतलब आज का जो opening price होगा वो पिछले दिन के closing से नीचे होना चाहिए, right? आज का ओपनिंग प्राइस, टुडेज ओपनिंग प्राइस शुड बी बिलो प्रीवियस डे क्लोजिंग, एंड टुडेज क्लोजिंग प्राइस, ओके, टुडेज क्लोजिंग प्राइस शुड बी ग्रेटर देन प्रीवियस डे ओपन, प्रीवियस डे ओपन। तो जहां पर आपको प्रीवियस डे चाहिए वहां पर आपको वन डे अगो सिलेक्ट करना है, इंस्टेड ऑफ लेटेस्ट यू नीड टू सिलेक्ट वन डे अगो. So this is the conditions for scanning those stocks in which we have a bullish engulfing pattern. ठीक है, फर्स्ट डे पे स्टॉक गिरना चाहिए, ऑन डे वन वी शुड हैव अ बेयरिश कैंडल, नेक्स्ट डे it should open below previous closing and it should close above previous opening. So this is how day 2 will cover day 1, day 2 will engulf day 1. Now let's say I want to scan cash stocks. ठीक है, आप कैश सेगमेंट को भी स्कैन कर सकते हो. So all those stocks which are part of equity segment, उनको भी आप स्कैन कर सकते हो. So when you run scanner, here you can see we have so many stocks जिनमें एक bullish engulfing pattern form हुआ है. So Dish TV, I hope everyone will be familiar with this. तो ये stock को cross check करते हैं whether this scanner is working fine. So here I will open Dish TV and quickly cross check if we have a bullish engulfing pattern. So guys, tell me in chat box, can you spot bullish engulfing? Dish TV में दिख रहा है आपको on Friday? Do we have engulfing pattern? Right here you can see we have a bullish engulfing pattern. So now you can quickly check these stocks can make engulfing pattern बना है. Now remember as a trader engulfing pattern works very well अगर वो एक important support location पे बने. So support location is very important. अगर वो important location पे पैटर्न बना है तो इन स्टॉक्स को आप मंडे को ट्रैक कर सकते हो. इफ यू गेट गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यू कैन start trading in those counters. So this is how your life will make these scanners will make your life very easy if you know how to give conditions. Now in the same way what you can do, you can give scanner, you can set conditions for bearish engulfing scanner. ठीक है, ये conditions किसके लिए थे? Bullish engulfing. So you can scan segment, whichever segment you are trading, you can scan cash, okay, futures, Nifty 50, mid cap, Nifty 500. So that's up to you कौन से segment में आपको scan करना. So opposite conditions you can give for bearish engulfing. तो bearish engulfing में क्या होगा? Previous day को एक bullish candle मिलेगी, तो यहाँ पर close greater than open होना चाहिए, and next day आप bearish candle की condition set कीजिए. So just do the opposite thing, you will get the scanner for bearish engulfing.
Now let me show you scanner on RSI. ठीक है, काफी ट्रेडर्स स्कैन करते हैं एज पर RSI कौन सा स्टॉक ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, राइट? सो लेट क्विकली क्रिएट वन वेरी सिंपल स्कैनर फॉर स्कैनिंग overbought, oversold stocks as per RSI. So before that, as a trader आपको पता होना चाहिए एक स्टॉक को ओवरबॉट स्टॉक कब कहते हैं. Okay, when we are using RSI, then when can we say that stock is overbought? Okay, when can we say the stock is overbought? Okay, overbought. Yeah, 70 above. Okay, so I will quickly give one condition. So click on plus, type RSI. Okay, I want those stocks in which 14 period RSI, right? By default, traders use 14 period. Now, instead of 14, let's say if you are using 20 or any other number, you can change the number. Okay, instead of 14, you can give 13 number, you can give 14 number, whatever number you want, you can change it. So latest RSI should be greater than 70. Now again, if you give greater than sign, so you will get all those stocks in which RSI is above 70. So it does not matter whether RSI turn above 70 1 month before, 1 week before, you will get all those stocks. But if you wish to have a fresh stocks coming inside overbought zone, then always select this operation, crossed above. When you select crossed above, you will get fresh stocks. So let's keep greater than as of now. Okay, so latest RSI 14 period RSI is greater than what? Which number? Now again, it's up to you whether you want to give number 70, above 70, above 80, or above 90 as per your wish. Okay, but by definition, as per in books, what it is written, when RSI turn above 70, then stock is said to be overbought zone. So let's say I want to scan Nifty 50 stocks. Click on run scan, and here you can see we are getting one stock in which RSI is trading above 70, which is HCL Technology. You can open the graph and cross check. If scanner is working fine, then you can save it. Okay, so here I have a RSI. When I place the cursor, you can actually read the value of RSI. Okay, from bottom left, you can read RSI value. So RSI is 70.88. So it has just turned above 70 on Friday, 70.88. In the same way, you can set condition for oversold. For oversold, what you will give, instead of greater than, it will be less than, and instead of 70, here you can keep number 30. If RSI is below 30, okay, then those stocks are known as oversold stocks. So click on run scan, and here you can see we have one stock meeting this condition, HDFC, in which RSI is oversold. Okay, this is HDFC. Place the cursor and you can clearly see RSI is 29. Okay, RSI is trading at 29 level. So this stock is in oversold zone as of now. So in this way, you can scan these stocks and you can do the further analysis. And maybe if you can check if this is good for trading, you can track this stock on Monday. Now, many traders prefer to do momentum trading. What is momentum trading? You guys can type in chat box. If anyone can type in chat box, what is momentum trading? How to scan stocks in which there is a momentum. In which there is a momentum. So this is called as trading momentum stocks. Again, we can use the RSI. Okay, when RSI turn above 60, then very high chances price can pick a very good momentum. If RSI has turned above number 60, then very high chances
प्राइस एक अच्छा मोमेंटम पिक कर सकता है, प्राइस कैन पिक अ वेरी गुड मोमेंटम. सो लेटेस्ट RSI I want greater than, or let's say crossed above. Let me show you now one scanner with this condition. Okay, crossed above 60. Okay, why 60 level is important? As I told you, RSI is an oscillator. Okay, it keeps on fluctuating between 0 to 100. So when RSI reading turn above 60, then very high chances price can pick a very good momentum. So I want those stocks in which RSI is above 60. Now you can add one more condition if you wish. Let's say I also want a closing price about 20 moving average. Okay, latest closing price. Okay, above, let's say 20 moving average. Okay, 20 moving average. So two conditions here I'm giving. RSI above 60, price above 20 moving average. So this is the very good combination of momentum. If you find these counters, this means price is having very good momentum. RSI above 60, price above 20 moving average. Okay, so latest close, okay, greater than, just a minute. Okay, EMA, here you have to select EMA. Latest closing price is greater than 20 period exponential moving average and RSI above 60. So let's scan if we have any stocks meeting these criteria. See, in Nifty 50 we do not have any stocks. So let's change the segment. Let's say if we have any stocks in futures meeting these criteria. Okay, this is called as momentum stocks. Okay, so L&T Infotech you can see is having meeting these conditions. Okay, so here you can see the graph of L&T. This is the last candle. Okay, you can read the RSI value. It is 60.31. It is more than 60. And price is also about 20 moving average. So this stock, you can see it is already in uptrend. So this clearly indicates इसमें already एक momentum चल रहा है. Okay, ongoing momentum is going on in this stock. So this is how you can scan stocks which are having good momentum. Now let me show you some scanners for intraday trading. अगर आपको intraday trading करनी है, if you wish to do intraday trading, then many traders look for open equal to high, open equal to low. Can you tell me why traders look for open equal to low? What this indicates, open equal to low? Open equal to low indicates we have a buyers active. That's why price is not going below opening price. So very simple scanner we can create based on this condition. So I want opening price equal to low price. So open equal low. Okay, open equal low. Okay, now this is as of intraday. So on intraday, you can create this scanner on 5 minutes time frame. Let's say market open at 9:15, and within 5 minutes, you want to scan those stocks which are having open equal to low. So instead of latest, okay, what I will select 5 minutes time frame. Okay, 5 minutes. I want this condition in very first candle. So can you see this inside bracket? We have a 0. Click on 0 and select equal to 1. Okay, equal to 1 indicates first candle. I want those stocks in which open is equal to low on 5 minutes time frame in very first candle of the day. So instead of latest, I will select 5 minutes. Okay, first candle on 5 minutes. First candle on 5 minutes. First candle on 5 minutes is having open equal to low. Okay, run scan, you will get the scanner. So as on Friday, last trading session, we have Dixon and Godrej consumers in which open is equal to low on 5 minutes time frame.
In the same way, you can also create a condition for open equal to high. Okay, so instead of low, just you can change the condition open equal to high. Okay, here you can see we have list of stocks in which open was equal to high. So we have how many stocks? Almost we got 45 stocks on Friday in which it was open equal to high. Let's pick one Hero Motors and cross check on 5 minutes time frame. Okay, this is the daily time frame. You can change the time frame to 5 minutes and look for first candle and see if it is proper. Okay, see, this is the very first candle. First candle, you can see it is bearish without any upper wick, right? There is no upper wick in candle. So this clearly indicates open is equal to high. You can also read open high information from top 2408.35. 2408.35 is open, 2408.35 is high. Now, if you wish, you can further cut down the list. As you can see, we have so many stocks which are meeting this criteria. So almost 45 stocks. So as a trader, we cannot trade all 45 stocks. So how we can cut down this list? What you can do, you can give one more condition. Okay, open equal to high, I can understand. It's a weak stock. What other condition I can give? See, other condition I can give, let's say price closed below. Okay, price closed below. Price closed below previous day low. Okay, previous day low. So whatever PDL was there, अगर उसके भी नीचे चला गया price, if price has fallen below previous day low, okay, in first candle on 5 minutes time frame, then this indicates more bearishness. The counter is more weak. So let me select this condition, see, and time frame should be 5 minutes. So stock not only open at its high, okay, not only we have open equal to high, but it also closed below previous day low in first 5 minutes of the day. In first 5 minutes of the day. So now when you click on run scan, let's see how many stocks we got. We got now only list of 10 stocks in which it was open equal to high and also price closed below previous day low in first 5 minutes. So market open at 9:15. By 9:20, you have open equal to high and closing price is trading below previous day low price. So generally, PDL work like support, but if price break previous day low also, then it's a weak stock, completely weak stock. So as a trader, we can trade in intraday. Now, once you create a scanner, okay, you need to save scanner. Once you save the scanner, you can also create an alert. Here you can see the option on screen. You can create an alert for scanner. Now, how you want to create alert for scanner? Here you can see you have different choices. Notification will be sent over email. Okay, you can click on email. You have SMS option also. You have desktop option also, desktop or mobile. So you can also create alert. So let's say tomorrow, if market will start on Monday and any stock is meeting these two conditions where open is equal to high, close is below previous day low, you will get the SMS. Okay, you will get the SMS if you select SMS, or you will get the email notification if you select email notification. So let me show you how you can select SMS notification. So save alert. See, when you save alert, here it is showing, okay, notification for this will start from tomorrow 9:20. So you will get the notification if any stock meeting these two conditions. Okay, so I hope you have understand how we can give conditions in charting, and we can scan the different stocks. Do we have Harman sir with us? Harman? Yeah. And it was very useful session, sir. Very useful session. Yeah. Guys, किसी का कोई doubt है? You can please ask all your doubts in the chat.
And before that, can you please tell me, it's very important, अभी एनर्जी है ना या अभी थक चुके हैं, कैसा है अभी? डू यू हैव एनर्जी, यस और नो? yes. Good. चलो ठीक है. So you have the energy. So we'll be doing one more session with Jaspreet sir. It would be a short one, not a very long one. 30 minutes session, quick session, जिसमें we'll be picking up stocks and then analyzing them for positional trades. ठीक है. अभी कई लोग कह रहे हैं can we get a 15-minute break? Guys, we are very sorry, we are running a bit late on time. आप लोग एक बार बता दो if you want a break or not. Else what we can do is, and this I would also recommend, कि हम 2 बजे break ले लेंगे एक, and 2 से 3 you can have a lunch break. यहाँ पे continuous हम कर सकते हैं, नहीं तो lunch break भी हमारा छोटा रह जाएगा अगर हम अभी break लेते हैं तो. 2 to 3 if it's okay for everyone. चलो ठीक है, लेट्स गो फ्रॉम 2 to 3. नाउ गाइस, हम जितने भी आप हैंड रेस करते रहो, आप डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पूछ लेना. विल बी टेकिंग 3 क्वेश्चंस. बाकी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप यू आर अ पार्ट ऑफ. विल बी पिकिंग अप ऑल दोस क्वेश्चंस फ्रॉम देयर. ठीक है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाय अक्षय. यस सर, जैसे हमने बुलिश एंगल्फिंग का हमने चार्ट पैटर्न बनाया था, क्या हम इसे सेम तरीके से हैमर या दूसरी चार्ट पैटर्न का भी बना सकते हैं इसमें? देखिए, आप 2 डे कैंडल पैटर्न्स का इजीली बना सकते हो. हैमर देखिए क्या हो गया ना, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज हैमर में वी हैव मोर वेराइटीज. सो वेरी फर्स्ट थिंग आपको पता होगा, हैमर में कलर डज नॉट मैटर. सो लेट्स से अगर आपने स्कैनर बना भी लिया, एक बुलिश हैमर का स्कैनर बना लिया, जिन भी स्टॉक्स में एक बियरिश हैमर बना होगा तो उन स्टॉक्स को आप मिस आउट कर जाओगे. तो इसके लिए हैमर का स्कैनर मत बनाइए, वो आप मैन्युअली चेक कीजिए, दैट विल बी वेरी गुड. बाकी जैसे बुलिश एंगल्फिंग, इट वाज वेरी सिंपल, तो उसका हम स्कैनर बना सकते हैं. आप इनसाइड कैंडल का स्कैनर बना सकते हो. बुलिश इनसाइड कैंडल किन स्टॉक्स में बना है, बियरिश इनसाइड कैंडल किन स्टॉक्स में बना है, आप स्कैनर बना सकते हो बुलिश किकर पैटर्न का. सो व्हाट इज बुलिश किकर पैटर्न? अगर ओपनिंग प्राइस प्रीवियस डे हाई के भी ऊपर खुली है तो उसको हम लोग कहते हैं बुलिश किकर पैटर्न. उसका स्कैनर आप बना सकते हो. बियरिश किकर पैटर्न का स्कैनर बना सकते हो. तो ये कुछ कैंडल पैटर्न्स हैं जिनमें इट इज वेरी इजी टू डिजाइन स्कैनर. बाकी हैमर का थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बिकॉज हैमर में कलर ऑफ कैंडल डज नॉट मैटर. तो हैमर ग्रीन कैंडल में भी बन सकता है, रेड में भी बन सकता है. एंड अपर शेडो किस कभी कभी होता है, अपर शेडो किन किन हैमर स्टॉक्स में नहीं होता है, वो सब. ओके, सो इन शॉर्ट वी कैन इजीली मेक 2 जिसमें 2 दिन की कैंडल चाहिए वो हम इजीली बना सकते हैं. राइट. सो एंगल्फिंग, इनसाइड पैटर्न, किकर पैटर्न्स, ये सब इजी हैं, इनके स्कैनर्स इजीली बन जाएंगे. बिल्कुल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय बिस्वदीप सर, प्लीज. गुड आफ्टरनून सर, वेरी नाइस सेशन. मेरा एक रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि कई बार अपने को the logic is really complex, like bullish engulfing, if it is at some support, that will help. So can we also link support with the engulfing pattern by using this? Yeah, that's what it is complex. So what I will advise, आप engulfing का स्कैनर बनाइए and quickly cross check कौन सा स्टॉक सपोर्ट पे है. So let's say if you want वो एक मूविंग एवरेज पे बना है तो मूविंग एवरेज का कंडीशन सेट कर सकते हो. Let's say you want a bullish engulfing pattern at 20 moving average, तो उसका आप कंडीशन सेट कर सकते हो. अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट पे चेक करना है तो आप क्या कीजिए, आप क्विकली स्कैन कीजिए, मतलब मैन्युअली स्टॉक्स चेक कीजिए, बिकॉज बुलिश एंगल्फिंग हर एक स्टॉक में नहीं मिलेगा आपको. यू विल गेट हार्डली 3 to 4 स्टॉक्स एट अ टाइम. देन इट विल बी इजी फॉर यू टू चेक कि वो एक इंपॉर्टेंट लोकेशन पे बने कि नहीं. बिल्कुल. Great. One last question, guys. बाकी क्वेश्चन you can type it in your WhatsApp group. Pawan sir, please. Hello. Yeah. Good afternoon, sir. Actually, I just want to know that whether I can plot this doji candle pattern. Sorry, can you please repeat, sir? Doji candle. Doji candle. Yeah. Okay. Doji candle में आपको कंडीशन पता होनी चाहिए. दोजी कैंडल हम कब कहते हैं? When closing is equal to high, right? When
क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों जब सेम होती है तब एक डोजी कैंडल मिलती है। तो आप बना सकते हो, इट्स वेरी सिंपल। सो लेट मी शो यू क्विकली। ओपन इज इक्वल टू व्हाट, यहां पर क्लोज होना चाहिए, ओपन इज इक्वल टू क्लोज। एंड आप लेटेस्ट सेलेक्ट कीजिए अगर आपको डेली टाइम फ्रेम में चेक करना है। तो किन स्टॉक्स में डोजी कैंडल फॉर्म हुई है वो आप देख सकते हो। हियर इज द स्कैन। ओके, सो इन आईटीसी स्टॉक इट इज शोइंग ओपन एंड क्लोज आर ऑलमोस्ट सेम। तो इसमें एक डोजी कैंडल फॉर्म हुआ है ऑन फ्राइडे। Can it be almost? It is not ऑलमोस्ट का हम लोग फिर नहीं दे सकते यहाँ पर कंडीशन, Okay. Okay. राइट? तो एग्जैक्ट कुछ स्टॉक्स आप फिर मिस आउट कर जाओगे। Uh-huh. Okay. Thank you. Thank you. Brilliant. Okay. Thank you, Manish sir. Thank you for giving us so much time.